फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फर्नीचर की प्लांट लगा रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस है? आई थिंक दो, एक तो देयर इज अ डिमांड फॉर श्योर. I don't want to discourage anybody from opening any plant. They should, because there is a demand. It's going to continue to grow. But I would say कि ज़रा सोचिए और समझिए कि किस चीज़ का आप लगा रहे हैं plant. What is happening in interior space of home interior, office interior, and other sectors? Shezan ji, when did you start your career? I used to work at a shop selling furniture. सोफ़ा बेचते थे, and सोफ़ा डाइनिंग टेबल और मैट्रेस भी कभी कभी बिक जाती थी. How many factories? We have 2 factories of our own based in Bangalore. You take a raw flat and you convert it to a full finished flat. Yes, we take a raw flat given by a builder and we convert that into home fit outs. So when you founded your company, the very first year in 2016, you made the store first or you did it all online? No, the first we had no store. The first year we had no store. We had only our office and online. And I remember customers would want to meet sometimes. So we used to go to their apartment and meet them. इंडिया में अभी भी चाइना से बहुत फर्नीचर आता है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से आता है, वियतनाम से आता है. वो बंद होता हुआ कब देख रहे हैं? टाइम लगेगा, होगा एक दिन, बट आई डोंट नो व्हेन. फर्नीचर पे ISI मार्क मैंडेटरी होने जा रहा है, तो क्या आप लोग उस प्रोसेस में उससे अवेयर हैं? Yes, we are already in the process. About the journey of Design Café, his own journey, and मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा about furniture growth story in India, and how a startup from scratch to 250 crore and aiming for 1500 CR. We are in studio of Design Café. We are speaking to Mr. Shezan Bhojani, who is an architect. Started his career in 2006 with Geeta, half and also friend. Today we will know more about what is happening in interior space of home interior, office interior, and other sectors. Let's welcome Mr. Shezan Bhojani. Hello. Thank you. Shezan ji, when did you start your career precisely? When I was still in college, I used to work at a shop selling furniture. As much as you can enjoy working when you are 16, 17 years old, as much as you could, I enjoyed it, and I learnt a lot. I know, because वो दुकान तो हमारी नहीं थी, doing a job, but you understand what customers, I worked there for 4 years. Quite a long period for the age. तो उस 4 साल में things were slowly changing. So it was a good experience if you ask me. And when me and my co-founder Geeta, when we passed out in 2006, I did not have the luxury of taking a job because I had to make more money than what a job offered. So we both started our own firm. We entered a competition. Luckily, we won the competition in 2006, and that's how we started. Did a little bit of interiors, built the firm to some decent degree. Then we started doing hotels, restaurants. From Calcutta to all the way Chennai, we did a lot of work. 90% of the architects, they feel that the fees is not enough and Indian consumers are not paying good enough as a fee to them. 100% agree with that also. There are two. So it is again contrast what you're saying, that you cannot afford even that. So it is, India is unfortunately, it's a paradox. It's a paradox, right? So I agree, as an interior designer, I felt underpaid if I looked at it as an interior designer's problem. But if I looked at the mass of the Indian market, they could not afford to pay for interior design. मतलब जहाँ रोटी कपड़ा और अभी मकान आ रहा है वो डिज़ाइन तो दूर की बात है. मतलब let's be honest. बिल्कुल. Right? वो तो मतलब जोड़ के घर खरीद रहे हैं. हमारा ये फीलिंग था कि 10 years from now, that 2016 के 2025, 26 में एक टिपिंग पॉइंट आएगी इंडस्ट्री में. And we wanted to be part of that because there's advantages to be there. So we feel that that's why we took the jump. Led to Design Café, foundation of Design Café. तो जब आपने ये बनाया तो फिर टेक, आप तो टेक से नहीं थे जी, फिर कैसे किया? बेंगलोर में है, हमारे कोई दोस्त थे जो टेक में थे, उनसे मदद ली, उन्होंने मदद की, एंड दे बिल्ट आवर फर्स्ट, इनफैक्ट
2016 में I remember we had an AI or MI driven, we can't say AI, but MI driven engine to design a kitchen. चला नहीं वो. Customer didn't want to use computer to design their kitchen. But then we use tech for other things to make a designer's life easy and to improve supply chain. So that time you had a factory? No, we didn't. So when we started, पैसे तो थे नहीं आते. So when you founded your company, the very first year in 2016, you made the store first or you did it all online? First year we had no store. We had only our office and online. So when did you open your first store? 2017. And what was the size of the store? 1200 square foot maybe. तो क्या स्टोर खोलने से कोई सेल में स्पर्ट आया? हाँ, थोड़ा सा आया था. हम तभी महीने का 25-30 लाख कर लेते थे प्योर ऑनलाइन. जैसे दुकान खोली 50-60 लाख तक पहुँच गया था. डबल हो गए थे सेल्स. So when did you find that Design Café is now stable? I think any startup or any business, the moment you think you're stable, it may be a little bit of a challenge in my mind. At least in my mind, if I don't wake up with some fear of failing at something or just kuch aise, I may not run as hard. So I will never think we are stable even after IPO, even after 5 years of IPO. I don't know when I will think we are stable. It's just how I am built. This thing, it happened in which year? This would have been 2018 September, 2018 early. So customer walk-in happens here? Customer walk-in happens, but mainly through appointment because we're mainly an online engagement with the customer. So mainly happens by appointment. So how many stores do you have now, pan India? Today we have 15 Design Café locations pan India. We also have 2 company-owned, company-operated carpentry stores. We also have 9 shop-in-shop carpentry stores. And you have how many factories? We have 2 factories of our own based in Bangalore. So you are doing turnkey, right? You take a raw flat and you convert it into a full finished flat. Yes, we take a raw flat given by a builder and we convert that into home fit outs. So what is your ticket size? So we have 2 brands. One is Design Café, where our average order value is 9 to 10 lakh rupees, typically for a 2-3 BHK. We have another affordable brand which is called Carpentry with a Q, and that a typical kitchen is 65,000 rupees including taxes, and a 2 BHK is about 2 lakh rupees including taxes. So in 2 BHK, what do you offer? We offer 2 wardrobes, loft, TV unit, bathroom vanity, kitchen. What material you use for the Plywood. Plywood. Are you also using chipboard or MDF or any other substrate? So in the Design Café brand, we use only plywood for the carcass and the shutters are HDHMR, that's all. So is there any benefit using plywood? We believe that it is obviously better and more acceptable for the consumer in India than MDF. And also for the shutters, we believe HDHMR is a better material than plywood to be used because no undulations, for finishing it's better. So yeah, we believe that generally for India and its conditions, plywood for the carcass is better. कस्टमर की हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी जल्दी और कितने कम पैसे में, जबकि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि कितना बड़ा टिकट साइज हो जाए और आराम से काम करने को मिले. तो इसमें आपका क्या मानना है? आप लोग जस्टिस कर पाते हैं? एक्चुअली मेरा मानना है कि जितना जल्दी हो जाए इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो. कैसे? Because same store, more throughput. So we are happy. We are more happy to do things faster than the customer. Actually, same factory, same designers. The churning is better. Is it in carpentry you are supplying only the furniture, and in Design Café you are providing everything, including lighting, POP, wall paneling, etc. In carpentry, is an inventory-led model. Okay. Which means that we have fewer color options and standard sizes, which means that we are able to buy in very large quantities, which brings the cost of production down, and also it's faster.
So that is carpentry. Also, slight difference in the core material between the two. Design Café is a more premium product, so much higher grade of say raw material, and it is made to measure. Sizes are more changeable. You have many more color options, many more handle options, much more complex supply chain. Some all of those things. So that's the broad difference between the two. Nothing else. Are you doing entire paint and all that also? Yes, we offer fall ceiling, we offer painting, we offer basic electrical work, basic plumbing work also. What is the ratio of these services and the Modular? Yeah, modular. 10% is services, 90% is modular. Do you believe that Indian consumers are still, they have started buying furniture with brand tag or something? I think the Indian consumer is smart. So I think that they are value conscious first before being brand conscious. And they will buy a brand when the brand delivers them value. Slowly they are realizing the value of a brand also. There are two things. Can the brand deliver value and the value of a brand? So I think we are at a stage where there is value in buying a brand, but as brands we are yet to fully convince the customers of our value. कहाँ पहुंचे आप आउट ऑफ 1 to 10 स्केल में? ब्रांड की फीलिंग कितनी आ गई? अभी तक तो मतलब आई नहीं. आई थिंक ब्रांड की फीलिंग है, बट आई वुड से जर्नी की शुरुआत है. आई थिंक अभी तो दिल्ली बहुत दूर है. बेंगलोर में 4 लोकेशंस, बॉम्बे में हमको मतलब जब तक हमारे इंडिया में 200-300 दुकान नहीं होते, हम कहाँ से ब्रांड बने. एक टाइम था जब लोग बात करते थे हमेशा डिजिटल ई कॉमर्स. क्या अब वो स्टोरी एंड हो गई? अब सबको ये पता चल गया कि डिजिटल और फिजिकल दोनों ही होगा. आई थिंक दोनों हो. डिबेट खत्म हो. डिबेट तो नहीं, आई थिंक डिबेट खत्म हो गया. आप सही बोल रहे हैं कि ये हर कोई आदमी हर चीज ऑनलाइन करेगा, वो तो मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल है. इंटीरियर स्पेस में तो नहीं होगा. इंटीरियर स्पेस में तो, फर्नीचर स्पेस में तो बड़ा मुश्किल है इफ यू आस्क मी. जैसे आंकड़े बताते थे कि पहले टिकट साइज 4,000 5,000 था ऑनलाइन ई कॉमर्स परचेज में, अब वो बढ़ के 12 से 15,000 हो गया. हाँ, तो कहीं ना कहीं खरीद तो रहे हैं लोग. 100% खरीद रहे हैं. हाँ, आई थिंक खरीदारी हो रही है, बट ये भी पूछना पड़ेगा कि अगर 5 साल पहले जो भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, चाहे अर्बन लैडर हो या परफॉर्मर, उनकी दुकान नहीं थी, आज उनकी 200 दुकान है. सबने खोली और खोल रहे हैं. उनका ग्रोथ मोड ये है. मतलब वो नहीं बोल रहे कि मैं ई कॉमर्स में और बेचूंगा, वो ये बोल रहे कि मैं और दुकान खोलूंगा. तो मतलब दिख ही रहा है फिजिकल फुटप्रिंट सब लोग बढ़ा रहे हैं. चाहिए. एक देखो, हर एक इंडस्ट्री में एक अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो मतलब ऑनलाइन खरीद लेंगे, बट एक थ्रेशोल्ड आ जाता है. उसके बाद टू गो टू द हार्ट ऑफ द मार्केट यू नीड द नेक्स्ट सेट ऑफ अडॉप्टर्स. उसके लिए वो कन्वेंशनल मॉडल चाहिए, बिकॉज वो चेंज होने को टाइम लग जाएगा. मे बी 10 साल बाद फिर से दिल से कि अच्छा भी और दुकानें पूरे ऑनलाइन में जाओ, हो सकता है. जो इंडिया की टॉप सिटीज हैं जो अभी सबसे ज्यादा फर्नीचर कंज्यूम कर रही हैं, और बाकी सिटीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे कारपेंटर्स की वर्किंग अभी भी ऑन है. जी हाँ. क्या आपको लगता है कि वो अब बदल रहा है बहुत तेजी से छोटी सिटीज में? आई थिंक बदलेगा. आई डोंट थिंक बदल रहा है, बदलेगा. हम अभी वाइजैक में है या कोयम्बटूर में है या some of these cities, जिसमें अभी मैसूर है, तो वी आर सीइंग दैट द कस्टमर्स एक्चुअली लाइक अ ब्रांड. उनको ब्रांड पसंद आता है कि हाँ हम ब्रांड के पास जाएं. इट जस्ट दी अवेयरनेस थोड़ी बिल्ड होनी है वहाँ पर. वो कस्टमर उतना ऑनलाइन नहीं है. हम ऑनलाइन ब्रांड है फर्स्ट, तो वो कस्टमर अवेयरनेस जनरेट करने थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा. इंडिया में कल्चर है डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, देन बाइंग रॉ मटेरियल. ये तीन पैरामीटर्स हैं. डिजाइनर्स रिफर और डिजाइन शो द कॉन्सेप्ट. कस्टमर गोज शॉप टू शॉप और कॉल्स, check the prices. Correct. Debate with the designer. If comfortable, okay. If not comfortable, change the SKUs. ऐसे में आप लोगों को वो डिबेट नहीं झेलनी पड़ती. ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे कस्टमाइज कर दो, मेरा तो एरिया इतना बड़ा है. तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज कस्टमर्स को कैसे डील करते हो आप? क्योंकि इंडिया में हर घर का साइज अलग है. हाँ, बात सही है आपकी. थैंकफुली हमारे SKUs आर अवेलेबल एवरी 2 इंचेस. एवरी 2 इंचेस. तो क्या वो स्टॉक में रहता है या ऑर्डर आने के बाद प्रोसेस करते हैं? जस्ट इन टाइम GIT बनता है. हाँ. बट वो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कस्टमर्स के पास एट डिजाइन कैफे. सो
I think from a size perspective, we don't have that problem. And it is mainly आपको क्या width और height ही मतलब match your ceiling and match your width. बाकी depth तो standard होता है kitchen का. A lot of even the height of the kitchen, it's all standardized. So in fact, we say it's better because when you go with some new designer या freelancer, उन्होंने अभी शुरू किया होगा, वो गलती कर सकते हैं आपके standard जो ergonomics होते हैं furniture के. और हमारे जो है वो हर size researched है और standardized है, so the designers cannot make mistakes. कि we have Geeta, we have Swati, other R&D team that spends a lot of time researching the best materials that are available globally, the colors that are available globally, the trends that are global, and then they create a catalog, refresh the catalog every 6 to 8 months. And these are designers that probably would otherwise charge 25 lakh rupees per house to design or 50 lakh rupees per house to design. These designers are now, their knowledge is going through our software to you. So if you're picking from my 250 colors, these are picked by the best designers. In material side, when we see on kitchen counters, what do you use normally? We use granite normally. Granite. What about solid surface? Solid surface, so we haven't. Quartz we are recommending. Solid surface, so we haven't recommended so far. Design Café के लिए franchise partners का role काफी है. Yes, हमारी growth में काफी है. अभी क्या ratio है franchise owned and अभी I think 30-40% company owned है, balance 60% franchisee owned है. And going forward, it will be franchisee owned only to scale. तो franchisees को कैसे आप लोग locate करते हैं? And what you look into a franchisee partner? उसके पास space होना चाहिए या invest करे वो या उसकी credential important है? क्या आप देखते क्या है? So first and foremost, I think luckily we've been lucky कि हमारे जो भी franchisee हैं, I think barring one in OMR and Coimbatore, barring two, all the franchisees have been internal for designers who have wanted to become a franchisee or someone who was a contractor हमारे लिए जब starting में फिर हम तो पूरा in-house ले लिया and then they have decided to become a franchisee. So I think for us preferably franchisee should come from a related field. So they are preferably designers. And a lot of the ones we have are designers, or interests we have also are designers, because they are able to foresee a future where organized is the way to go. They also realize that customers moving towards organized. Also, it makes their job simpler. See, today a designer spends maybe 40-50% time designing, balance time at site. Franchisee store से आप minimum requirement क्या रखते हैं? 2000 square feet space. So it depends. Metros में 2500 square foot minimum is required. Non-metros में 1500. Say 2,500 square foot. In non-metros, for Design Café brand, investment of say 35 lakh rupees average. Metros में 50 lakh to 60 lakh rupees. For the carpentry brand, no, but what do you expect from him in person? ये तो हो गया space और capital. Nothing. We manage the entire. For the metros, Design Café manages everything. For the carpentry brand, we have a franchisee-owned, franchisee-operated model, where they have to invest 10 lakhs, maybe have 500 to 1000 square foot of space. And we will give them the technology, the software that our designers work on, the supply chain, everything, the brand. And they just have to convert the customer, make the sale to the customer and handle the customer. How much value you actually generate from a franchisee store? I think you'll get your full payback within 3 years, 30 months, 24 to 30 months, you get your investment back. And then it's about 3% a month, 2-3% a month. What about hardware section? I mean, in hardware, we have so many variety of hardware, functionality, performance, brands, aesthetics. So, does it pose any challenge? No, because I think we keep the best brands. So we have Hafele, we have Epco, we have a couple of other brands as well. And we have the best of their products available with us. Now, if a customer has a hardware it's there to provide a function for a furniture. Whatever function you may have in your home, we have hardware for that. And we have hardware that comes from 5 years to lifetime warranty. So we are giving you all the hardware options. एक consumer क्यों लगाए रेडीमेड फर्नीचर अगर उसके पास एक अच्छा कारपेंटर है और उसके पास एक जानकार सप्लायर है और उसके पास पिंटरेस्ट पे किचन की फोटो है या इंस्टा पे, तो क्यों आएगा आपके पास? ये देखिए 2-3 चीज होती हैं.
एक तो वो बोलते हैं ना, आजकल के लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर और एक्चुअल पिक्चर में बड़ा फर्क होता है। तो जो आपने पिंटरेस्ट पे देखा वो तो प्रोफाइल पिक्चर है। हाँ, उसमें सेटिंग्स, फिल्टर, लाइटिंग जो भी होती है, बहुत कुछ है। उसको रियल लाइफ में बनाने में थोड़ा सा फर्क आता है फ्रॉम फॉर समवन हु इज नॉट डूइंग दैट जॉब डे एंड डे। आप लोगों में जब आप सप्लाई करते हैं तो आफ्टर सेल्स कंप्लेंट्स आती तो हो? हाँ, वो आती है। आई थिंक किसी भी प्रोडक्ट में आती है। हमारे पास वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स, वी हैव अ डेडिकेटेड हेल्प ईमेल, वी हैव मेंटेनेंस टीम। फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फर्नीचर की प्लांट लगा रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? क्या उन्हें जिस तरह से फर्नीचर में बहुत सारा एक यूनिट को रन करना आसान नहीं है, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? I don't want to discourage anybody from opening any plant. They should, because there is a demand. It's going to continue to grow. But I would say कि जरा सोचिए और समझिए कि किस चीज का आप लगा रहे हैं प्लांट, और आपका राइट टू विन क्या है। देखो, हर चीज में यू हैव टू हैव अ राइट टू विन। व्हाई शुड यू विन? आप में वो क्या है? अगर आप एक मी टू प्लांट है तो आइदर इट्स के इतना डिमांड है कि भाई चावल है या गेहूं है, मतलब फिर तो मतलब चलेगा। बट अगर एक रियली इट इज अ specific industry, then you have to have some right to win, either it's some unique machine or it is by far the biggest plant with the lowest cost of conversion. I don't know what it is. Yeah, I don't know. It is something unique. स्टैंड अलोन स्टोर खोलना या एक बाजार में जहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वहाँ स्टोर खोलना, विच इज मोर प्रैक्टिकल? नहीं, बाजार में जहाँ स्टोर है वो बाजार का बेस्ट लोकेशन है। परफॉर्मेंस जहाँ रिलेटेड आइटम्स का मार्केट 100%. in India, when we have still long way to go, I believe my knowledge, my analysis says that it's hardly 6-7% organized furniture business is happening. Rest is all carpentry based. What turnover do you look at in next 5 years? I think if we are not crossing 1,500 crores of turnover by the next 5 years, 1,000? between 1,000 to I think 250, I think 1,500 crores if we're not touching across segments. We also plan to launch offices and other segments. So across these segments, if we are not crossing at least 1,500 crores, then definitely something is wrong. Future of interior retail है क्या? Future of home retail बड़ा strong है इंडिया में, because बहुत सारे घर बिक रहे हैं, और historically ये देखा जाएगा तो whenever a country's GDP per capita goes over $2,000, there is a lot of spend in interiors. And we have seen that in Thailand, Indonesia, Malaysia, all of these countries, when they have crossed that threshold of $2,000. So you see a big takeoff in spends for home inside. It's huge. It's unbelievable actually. तो वो स्टेज इंडिया में पहुंचने वाली है. We've already crossed $2,200, and now in the next 5 years, you will be surprised. I will be surprised. And with the amount of money people will spend in their homes, not only on modular furniture but decor, lighting, it is going to go crazy. इंडिया में अभी भी फर्नीचर में ब्रांड बहुत कम है. इंडिया में ब्रांड है ही नहीं, सब स्टैंड अलोन ब्रांड्स हैं, अपने अपने सबके ब्रांड है. बनेंगे सर. तो ये बनेंगे कभी इंडिया में भी, जैसे अदर प्रोडक्ट्स में होता है, इसमें भी ब्रांड बनेंगे? आई डोंट थिंक कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें आप कभी भी बोल सकते हैं कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जिस तरह इंडिया इज ग्रोइंग एंड जिस तरह जुनून है आजकल देश में हमारे, तो 10 साल में तो हमारे हर चीज के ब्रांड होंगे, क्यों नहीं होंगे. So it is the right time to be in. It is the right time for the next 50 years to be only in India. Much after I am gone, this is the place to be. In some time, we will be superpower. इंडिया में अभी भी चाइना से बहुत फर्नीचर आता है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से आता है, वियतनाम से आता है. वो बंद होता हुआ कब देख रहे हैं? टाइम लगेगा, होगा एक दिन, बट आई डोंट नो व्हेन. फर्नीचर पे ISI मार्क मैंडेटरी होने जा रहा है. जी हाँ, अगले 2-3 महीने में आने वाला है. तो क्या आप लोग उस प्रोसेस में उससे अवेयर हैं? Yes, we are already in the process. So in that line, most of the products will be ISI mark. Yes. So it will be benefiting most of you guys, I feel. It will benefit the organized sector. It will benefit. So we look at a good growth cycle next. Yes, I'm looking forward for the next 5 years and hopefully something big for us. Thank you very much, Shezan. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Today we have talked with Mr. Shezan about the journey of Design Café, his own journey, and
मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा about furniture growth story in India, and how a startup from scratch to 250 crore and aiming for 1500 CR. ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसे देखें, सीखें. डू लाइक आवर podcast, subscribe to our channel and stay tuned. Thank you very much, and must check Design Cafe, all the products on their website. I hope whatever is talked will be delivered to you. Thank you.